हाँ टॉपिक है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। तो बेसिकली हम लोग इंटरवल्स पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज दिस इंटरवल, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इंटरवल एंड हाउ टू राइट द इंटरवल। ओके, नाउ सपोज हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे। 3 से 4 चार एग्जांपल्स लेंगे टू basically understand this topic. Example will be best way to understand this topic. Now suppose there is a set. Okay, there is a set. Let's take an example. Okay, so there is a set that has all the elements. Okay, let's say this is a number line. Let's say this is one, two, sorry, zero, one, two, and it goes on. Okay, it goes on. Now let's say there are infinite numbers of element between one and two. Okay, in between 1 and 2, including 1 and 2, in between 1 and 2, so there are infinite numbers of real numbers between 1 and 2. Okay, between 1 and 2 there are infinite numbers of real number. Now suppose there is a set that has all the real numbers between 1 and 2, okay, including 1 and 2. So suppose that set is this set. Okay, this is that set. तो अगर मेरे को इस सेट को लिखना है, तो आई कैन नॉट राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट because there are infinite numbers of real number between 1 and 2, so I cannot write all the real numbers in this set. So I can write this set in form of set builder form, so that will be much more easier. Okay, so what we will do, let's say this set has element, there will be infinite numbers of element, so let's say all the elements are x. So I have used x, which represents all the element of the set. So there are infinite numbers of elements. All those elements are represented by this letter x. So जितना भी element है उसको हम लोग x से represent कर दिया. Now what we will write? We will write that x is less than or equal to 2 and greater than or equal to 1. क्योंकि इसके अंदर इस हम क्या बोला, ये जो सेट है, इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो रियल नंबर्स है, एंड वो रियल नंबर्स वन एंड टू के बीच में जो भी रियल नंबर्स है वो सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली वन एंड टू के बीच में जो भी एलिमेंट है, जो भी रियल नंबर है, वो इस सेट में बिलोंग कर। ठीक है, सो दे आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। सो उसको लिखेंगे कैसे, दैट एक्स इज एलिमेंट which represent all the element. Okay, so x is the element of this set such that x is less than or equal to 2, greater than or equal to 1. So जो भी एलिमेंट है वो 2 या 2 से छोटा है एंड 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, और हमें ये भी बताना है कि ये सारा रियल नंबर्स है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट आर रियल नंबर। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये जो सेट है इसके अंदर सारे रियल नंबर्स है, which is which is 1 and greater than 1 and 2 and less than 2. Okay, so all the real numbers belong to this set between 1 and 2. Now ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। नाउ इसको हम लोग इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो हाउ वी विल राइट इन इंटरवल फॉर्म। टू राइट इन द इंटरवल फॉर्म, पहले हम लोग को देखना है, पहले हम लोग देखना है उससे पहले एक चीज बताया था, ये जो सेट है इसके अंदर में 1 एंड 2 इंक्लूडेड है। सो ये जो रियल नंबर्स है, इसके बीच में जो भी रियल नंबर्स है वो तो है ही है, बट उसके अलावा 1 एंड 2 जो एंड पॉइंट्स है या फिर एंड एलिमेंट्स है वो भी इंक्लूडेड है इस सेट के अंदर में। ओके, सो 1 इंक्लूडेड है एंड 2 भी इंक्लूडेड है। सो 1 के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, 2 के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड है एंड 2 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जिसमें x is the element of this set and now x is less than 2, greater than 1 and x is a real number। मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो 2 से छोटा है एंड 1 से बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो 2 से छोटा है एंड 1 से बड़ा है, एंड सारा एलिमेंट रियल नंबर्स है। सो देयर आर इनफिनिट नंबर्स ऑफ रियल नंबर व्हिच आर लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। सो इन दिस केस क्या है, तो 1 एंड 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, x ग्रेटर देन 1। इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, x लेस देन 2।
सो इस केस में क्या है कि वन एंड टू इंक्लूडेड नहीं है, बट इस केस में क्या था, वन एंड टू इंक्लूडेड था। ठीक है। सो वन इंक्लूडेड नहीं है, सो उसके लिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। टू भी इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए ये वाला ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स फॉर एग्जांपल, so this is the third example. X is element such that x is less than or equal to 2 and x is greater than 1. X belongs to R. ठीक है। ये तीसरा एग्जांपल जिसमें क्या है, x is less than or equal to 2 and greater than 1. So all the elements in the set are less than or equal to 2, greater than 1. ठीक। मतलब इस केस में क्या है कि 2 इंक्लूडेड है। You can see equal to here. So 2 is included in this set, but 1 is not included because all the elements are greater than 1, not equal to 1. All the elements are greater than 1. So उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग। सो 1 एंड 2 तो होगा ही है क्योंकि 1 एंड 2 आर एंड पॉइंट्स, but in this case 2 is included but 1 is not included. So when I say not included, 1 is not included, all the elements are greater than 1. Okay, so 1 is not included. So for not included, we will use this bracket, and 2 is included, so we will use this bracket. Okay, so यहाँ पे क्या था, दोनों included नहीं था क्योंकि एलिमेंट जो है वो 2 से छोटा है एंड 1 से बड़ा है। सो इस केस में क्या दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, ना ही 1 एंड ना ही 2, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है इस सेट में। नाउ इन दैट केस 1 is not included, we will use this bracket, and 2 is not included, we will use this bracket. So एंड ये केस में क्या है, दोनों ही इंक्लूडेड है, 1 एंड 2 दोनों ही इंक्लूडेड है। सो हम लोग क्या करेंगे, 1 के लिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, 2 के लिए भी ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके। नाउ तीसरा एग्जांपल, सॉरी फोर्थ एग्जांपल, x is the element such that x is less than 2 but greater than or equal to 1 and x is real number। ठीक है। ये फोर्थ एग्जांपल है। नाउ इसको हम लोग कैसे लेंगे, एलिमेंट x विच इज लेस देन 2। सो जो भी एलिमेंट है इस सेट में वो 2 से छोटा है, एंड जो भी एलिमेंट है वो क्या है, 1 एंड 1 से बड़ा है। ठीक है। Equal to 1 and greater than 1 or greater than 1. So, so in this case, 1 is included. In this set, 1 is present. Okay, क्योंकि we have considered x as the element of this set and x is equals to 1. Okay, and x is greater than 1. Okay, so 1 is included in the set. So for that, 1 is included means for 1 we will use this bracket and for 2 we will use this bracket. Because 2 is not included, all the elements are less than 2, not equal to 2, less than 2. Okay, means 2 is not present in the set. So we will write for 2, we will write this bracket. Okay, so this is how we represent the set of real numbers, set of continuous real numbers in interval form. Okay, so this is how we write interval form. So point to be noted that this has to be real numbers. All the elements has to be real numbers. Okay, all the elements has to be real numbers. We represent this for only real numbers. We represent this only for real number, and every interval, every interval will always be the subset of real number. Okay, it always be the subset of set of real number. That is what it is. So this is a good example. This is only, so there will be only 4 cases to represent interval. So these are the 4 cases. So in the first case, what was in the first case? So end elements, both the end elements were included in the set. Okay, both the end elements were included in the set. So for both the elements, we will use these brackets, this square type brackets. Okay, and if elements are not included in the set, for this example, 1 is also not included, 2 is also not included. For that, we will use this bracket. Sorry. So for that, we will use this bracket. And suppose only 2 is included. So for 2, we will use this bracket. And 1 is not included. Okay, 1 is not included. X is greater than 2. For that, we will use this bracket. And when this 1 is included, so we will use this bracket. And for 2, we will use this bracket. Okay, this is how we represent interval form. So this is set builder form. Sorry. This is set builder form. This is the set builder form.
and this is interval form. How we represent the real numbers in interval form. This is interval form. Okay, these are interval form. So any set of real numbers, any set of continuous real number, we can represent represent all the set of continuous real number in interval form. Okay, so we will use this interval form in many chapters. In trigonometry, in inverse trigonometric function, all those chapters, we will use this interval form to represent domain and range. Okay. So our next topic will be power set, and then we will move on to universal set. So that we will cover in the next video.